sitting with Mr. Mohsin, our collaborative partner and the accountable manager at Hybrid Aviation. यासिर साहब का भी जो यहाँ के ओनर हैं, हम उनका भी मेन CEO and the owner, उनका भी हमें But engineering has been very helpful. Engineering gives the mind a very structured thinking process, which in any business or even in personal life, professional life, is a very important thing to be in Port Lakpat. And Hybrid Aviation was established over here at Walton. Started small, but today, alhamdulillah, we have the largest fleet of Pakistan. And our student pilots are now flying 380s. This video. आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? Why should they pursue their career as a flying cadet or maybe look themselves in future? Flying जो है आपको business सिखाती है. वो पहले आप शुरू करते हैं कि आपने land कहाँ पे करना है. So business के अंदर you must know your end point and then आप वहाँ से फिर शुरू से जाते हैं end point की तरफ. So flight planning is like और उनकी इमरजेंसी हैंडलिंग इसलिए बेहतर होती है तो उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ क्या ख़राब हो रही है फ्लाइंग के दौरान और उसको किस तरह से ठीक करना है. अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है तो देन यू डोंट नो. कि सिविल एविएशन का एग्ज़ाम ना होना एंड देन एक्सटर्नल बॉडी एंड एक्सटर्नल जो लोग हैं वो आके अब हमारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे. डोंट यू थिंक ये क्रेडिबिलिटीज़ को क्वेश्चन करता है एज अ पाकिस्तानी पायलट एंड हमारे सिस्टम को एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है. Assalamu alaikum, welcome to Iame's official YouTube channel. And as I told you about 6 months ago कि हम पायलट का कोर्स भी लॉन्च करने लगे हैं and we are sitting with Mr. Mohsin, our collaborative partner and the accountable manager at Hybrid Aviation. यासिर साहब का भी जो यहाँ के ओनर हैं, हम उनका भी मेन CEO and the owner, उनका भी हम इंटरव्यू करेंगे. But as of now we have got our senior person over here who's going to express के why flying is important. First we'll go and ask him about his experience and about his career and थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम sir, hope you're doing well. Islam, thank you. Sir, first of all just tell us about yourself, exactly who you are, आपकी designation क्या है and आपका सफ़र hybrid का कैसा गया है and how do you see कि hybrid की और IME की collaboration in the flying जो आई है, how do you see this venture going on in the future? Gee, thank you very much. Basically, I became a pilot in 1972 and an engineer in 1976. So my first passion is flying, and I've been very passionate about it. I've been flying a lot in States. I got my PPL and I was flying all over America. But engineering has been very helpful. Engineering gives the mind a very structured thinking process, which in any business or even in personal life, professional life, is a very important thing to be organized. So I did my FSc, I did my engineering from UET Lahore, and my private pilot license, my first issue was from Peshawar Flying Club, and then I got my PPL from United States. After engineering, I went to Saudi Arabia. I was part of the team which designed Jubail industrial zones and refineries. Then I was in States. I became a circuit design engineer. I specialize in what's in these telephones, what you have, cell phones. I designed the circuits which are in there, and I became a production person in States. Came back, set up my own factory in Port Lakpat, Lahore. And since I loved flying, I got some business for maintenance of textile machinery. Okay. And it was called Sulzer weaving machine. So they were spread all over Pakistan. So when they gave me their dealership for repair and maintenance, I used to rent a plane from Lahore Flying Club and fly with my engineers to Sakhar, to Bannu, get the equipment fixed and come back the next day. Nice. All very happy, and the customers were very happy to pay for the flying charges without any problem. So one day I thought instead of paying somebody else, it would be better to have my own aircraft and start flying myself. So I got my first twin engine aircraft. It was a Cessna 310. And then I started flying all over the country and fixing equipment and designing and constructing industrial zones. And then came in the charter business. So we had a second twin engine aircraft.
And after that, we started the flying school. And that's how hybrid came. So Hybrid Technics Private Limited is established. It's running a factory in Kot Lakhpat, and Hybrid Aviation was established over here at Walton. Started small, but today, alhamdulillah, we have the largest fleet of Pakistan. And our student pilots are now flying 380s in the world. Okay. We have been focusing on very dedicated instructors, hardworking instructors. The whole team works very hard. The engineering team, the flying team, and it's been a successful story of partnerships and JVs and collaboration. And that's why when your offer came, we are always open for joint ventures and collaboration with people who have the same passion and are interested in the same field as we are. That's nice. We came to know ke hybrid aviation kaise bana. We came to know how much Mr. Mohsin is passionate about the aviation and how much he was excited as when this collaboration was introduced, and that came into my mind. Now, my next question is for the future students. I'm sure whosoever is looking into this video, आप उन students को क्या कहना चाहेंगे? Why should they pursue their career as a flying cadet or maybe look themselves in future as a pilot? एक्चुअली मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि आदमी को फ्लाइंग इसलिए सीखनी चाहिए कि फ्यूचर में जब आदमी एजुकेशन के बाद आदमी को बिजनेस में आना चाहिए. बिल्कुल. और फ्लाइंग जो है आपको बिजनेस सिखाती है. वो पहले आप शुरू करते हैं कि आपने लैंड कहाँ पे करना है. सो बिजनेस के अंदर यू मस्ट नो योर एंड पॉइंट एंड देन आप वहाँ से फिर शुरू से जाते हैं एंड पॉइंट की तरफ. सो फ्लाइट प्लानिंग इज लाइक बिजनेस प्लानिंग. सो फ्लाइंग इसलिए सीखें, न सिर्फ ये कि आपने जॉब करना है, आपने अपना जहाज लेना है, अपना जहाज रखें, खुद फ्लाई करें और साथ साथ अपना बिजनेस करें. सो एजुकेशन भी लें, फ्लाइट ट्रेनिंग भी लें, अपना जहाज भी रखें, अपनी बिजनेस भी करें और साथ अगर जॉब करनी है तो जॉब भी करें. सो इट्स अ वेरी मल्टी डिमेंशनल थिंग. और फ्लाइंग के बीइंग अ पायलट साथ साथ उसकी जो फ्लाइंग के जो सिस्टम्स होते हैं उसके लिए जितनी कम से कम मिनिमम इंजीनियरिंग आपको करनी चाहिए वो ज़रूर करें. क्योंकि जहाँ पे मैं अमेरिका में सेंटा मोनिका में कैलिफोर्निया में फ्लाई करता था, ज़्यादातर पायलट्स पहले आते हैं एज AMEs, वो फिर मेंटेनेंस इंजीनियर्स बनते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर फ्लाइंग करते हैं. और आप इसलिए देखेंगे कि अमेरिका इज़ द मदर ऑफ एविएशन. वाई? बिकॉज उनके 90% और मोर 100% जो प्रोफेशनल्स हैं बड़े पैशनेट एविएटर्स हैं और वो इंजीनियरिंग भी समझते हैं, फ्लाइंग भी समझते हैं. और उनकी इमरजेंसी हैंडलिंग इसलिए बेहतर होती है कि उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ क्या ख़राब हो रही है फ्लाइंग के दौरान और उसको किस तरह से ठीक करना है. अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है तो देन यू डोंट नो व्हाट हैपेंस. और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमारा एक अनफॉर्चुनेट सा कल्चर है कि पायलट्स जो हैं वो ब्राह्मण होते हैं और इंजीनियर्स जो होते हैं शूद्राज होते हैं. सो मैंने उन दोनों को मिक्स किया और हमारा जो हैंगर है इसमें आप देखें कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऊपर है और इंजीनियरिंग नीचे है, नॉट सेपरेट, दे आर टुगेदर. और पायलट्स और इंजीनियर्स मिल के काम करते हैं. एंड दैट्स हाउ जब भी जहाज़ की मैं टेस्ट फ्लाइट करता हूँ तो मैं अपने इंजीनियर को साथ लेके जाता हूँ ताकि वो भी देखे कि जी जहाज़ के अंदर जो चीज़ मैंने ठीक की है उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है. That's good. That's quite motivated. Sir, recently, let's talk about now local industry. Recently, as we all heard कि जो civil aviation के pilot के exams से now they have been shifted to UK civil aviation, I guess. इसमें आपका क्या टेक है? दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट क्वेश्चन, बट इसमें आपका क्या टेक होगा कि सिविल एविएशन का एग्ज़ाम ना होना एंड देन एक्सटर्नल बॉडी एंड एक्सटर्नल जो लोग हैं वो आके अब हमारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे. डोंट यू थिंक ये क्रेडिबिलिटीज़ को क्वेश्चन करता है एज अ पाकिस्तानी पायलट एंड हमारे सिस्टम को एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है? एक्चुअली सारी लिमिटेशंस को आदमी को एक क्रिएटिव उसमें से अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए. एग्जामिनेशन सिस्टम, मैं चेयरमैन टेफ्टा पंजाब था, तो जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है अगर आप GMAT GRE को देखें तो उसके अंदर क्वेश्चन बैंक बनाना, इट्स अ हाईली साइंटिफिक प्रोसेस. जब एक किसी टॉपिक पे आप क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो उसके अंदर पहले लो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, फिर वो हल्के हल्के उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है. पर्पस ये होता है कि जब स्टूडेंट्स इम्तिहान लेते हैं
تو ان کی سیگریگیشن ہوتی چلی جاتی ہے, بننگ ہوتی چلی جاتی ہے, کون بچہ کتنے گریڈ سکور کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے ٹوفل کے اندر, جی آر ای, جی میٹ کے اندر, وہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے باقیوں کے حساب سے کتنے پرسنٹیج مارکس زیادہ لیے ہیں. دے ڈونٹ گریڈ یو ان ایبسولوٹ کیپیبلٹی, دے کمپیئر یو ود دا ریسٹ آف دا ہول گروپ کہ آپ کے اسکورس کتنے وہاں پر آئے ہیں. Unfortunately, پاکستان کے اندر not only in civil aviation, the whole educational system, technical education system, even in engineering education, we do not have a proper examination system. Examination system is a complete science. اینڈ اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو ان کی کمپلیکسٹی, گریڈیشن اور اس کے جو ریپلائز ہوتے ہیں اس کو وہ کرتے ہیں. سو سول ایویشن میں آئی ہیو بین فلائنگ اوور ہیئر سنس 1985-86 اینڈ آئی سی دیٹ ان کے کوشچنز کافی جو تھے وہ دے ور ڈس آرگنائزڈ. اب we have to take advantage of having a UK based monitoring system. Let's learn how the banks are created, how the complexity level is established, how the students are taught, اور ان کی ویکنیسز کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے ریموو کرنا ہے, تاکہ ایک ریئل مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن سسٹم آئے which is based on some scientific data and a process. So I think we should learn from the UK, from EASA, from FAA, and establish a better system than we had before. Which means that this is a positive thing to have UK civil aviation examination system in Pakistan. And thank you so much for giving me your time, and thank you so much for watching this channel, and we'll see you again with another interview and another information center. Next segment would be air crash investigation, and I'm back with another investigation process, and we'll learn about how pilots or engineers or nature came in between with the crash. Thank you. Allah Hafiz.